Welcome everyone, welcome to this training. And today what we are going to do is we will learn about a very simple tool which is called parallel channel. Now we take use of this tool for a lot of reasons. We use this tool for setting up targets, for setting up stop losses, for knowing the supports, resistance, and where the stock can be sold, stock can be bought. In addition to this, parallel channel also tells us about the overall trend of the stock, whether it is moving in a good uptrend, whether it is going in a downtrend, whether there is a chance of a breakout or not. You'll understand all this more and more as I explain it with the drawing, with the chart. Now, this tool is very effective. It is one of the most simple tools to use, and sometimes we tend to ignore things which are very simple, and that is how this tool is little bit of, you can say, ignored, and lot of people don't use this very effective tool. I want you all to start looking at this tool, and by using this simple tool, there is a chance that you all will be able to make good money. You will be able to create lot of wealth for yourselves. For this, what you need to do is you need to connect two peaks of the stocks and one valley. I will practically do it and show it to you so that you will understand it better when I do it. Now, this is a typical, what we see here is a typical channel. Now, channel is like a canal. Like water flows in the canal, but it cannot leave the boundary of the canal. The stock prices also follow a particular canal, or like a channel. They also rise, hit the channel top, again come down, hit the channel bottom, again rise and go towards channel top, and again after hitting the channel top they tend to come back to the midline or to the bottom of the canal. So you understand, everybody can see this drawing? Either you guys, one or two of you can keep your mics on and answer the question, or Yes. you can write in the chat box. Yes, sir. Very clear, sir. Okay. The chart is very clear, right? Yes, sir. Now you understand what are the nomenclature, what are the names that we are giving to the chart. Okay. So as you can see very clearly, this is the channel bottom. Okay. So what will happen when a stock hits the channel bottom? Obviously, after hitting the channel bottom, the stock will tend to go up. If that bottom is the real bottom, if that bottom is respected, तो बॉटम को हिट किया, फिर बॉटम को हिट करके ज्यादातर बाउंस ही होना है, बराबर है? तो जैसे पानी कैनल में चलता है, वैसे स्टॉक का प्राइस चैनल में चलता है. ये कैसे आइडेंटिफाई करना क्या चैनल है, किस चैनल में चलता है, वो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद. पहले हम समझ लेते हैं कि चैनल क्या है, उस चैनल के अलग अलग भागों को क्या नाम से हम बुलाते हैं, राइट? तो ये जो चैनल का एंड है, जहां से स्टॉक का प्राइस बाउंस होता है, देखो इधर से भी बाउंस हुआ, और देखो इधर ये चैनल बॉटम आया तो इधर से भी बाउंस हुआ, राइट? तो अगर ये आगे जाके इधर आ जाता है तो इधर से भी बाउंस होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए इस जगह को, जहां से प्राइस 1 2 3 आगे फ्यूचर में हो सकता है 4 बार बाउंस होता है, बार बार बाउंस होता है, उस जगह को हम कहेंगे चैनल बॉटम. क्लियर? एनी डाउट?
If it goes up, then it is a uptrend, or if it is go below that, stop loss will be hit, right, sir? Right, right. We will come to that. You are very fast, but that is the idea. Okay. So first, Okay. let us understand what is the channel bottom. Similarly, very similar to channel bottom, we'll talk about channel top. Now you see, when the stock hits the channel top, what is happening? Once here, then again here, okay, then again here, then again somewhere over here. So channel top, when the stock hits the channel top, जब stock channel के top पे जाता है, तो channel का जो top होता है वो एक resistance होता है, और वहां से stock का नीचे आने का chance बहुत बढ़ जाता है. As you can see here, 1, 2, 3, 4 instance it has already happened, and this is a 1 year channel, right? ये May to May दिखा रहा है. तो एक साल में ये चैनल टॉप, ये स्टॉक तोड़ नहीं पाया है. करेक्ट? सो दिस इज अ चैनल टॉप. सो चैनल बॉटम वाज अ सपोर्ट एंड चैनल टॉप इज अ व्हाट इट इज. चैनल बॉटम अगर सपोर्ट है तो चैनल टॉप क्या हुआ? रेजिस्टेंस, राइट? जिस तरह से चैनल बॉटम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसी तरह से चैनल टॉप विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Okay. Now there is a dotted line you can see over here in the middle of the channel, right? This is called mid channel line. What is it called? Mid channel line. Now mid channel line will be a support or it will be a resistance? Can anybody tell me? It can either be a support or it can be a resistance. वो support भी हो सकता है और resistance भी हो सकता है. Support कब होगा? तो जब प्राइस वो लाइन के ऊपर है, आप देखो इधर, तो वो लाइन बार बार उस स्टॉक को सपोर्ट दे रही है. लुक एट माय एरो, राइट? जब प्राइस ऊपर है तो उसको सपोर्ट मिल रहा है बार 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 बार. लेकिन जब ये मिड चैनल का सपोर्ट टूट जाएगा तो the same mid channel line becomes a resistance. You can see over here, so many times the price is stopping the stock price to go ahead, ऊपर जाने नहीं दे रहा है. तो मिड चैनल लाइन में आपको सपोर्ट भी मिल सकता है या मिड चैनल लाइन आपको रेजिस्टेंस भी दे सकती है, डिपेंडिंग के स्टॉक का प्राइस उसके नीचे है तो वो रेजिस्टेंस हो गया. स्टॉक का प्राइस अगर मिड चैनल लाइन के ऊपर है तो मिड चैनल लाइन जो है वो एक सपोर्ट लाइन हो गई. क्लियर? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Got it. तो एक जो चैनल होता है वो उसके हमने 3 पार्ट स्टडी किए. चैनल टॉप, एसेंशियली इट इज रेजिस्टेंस. चैनल बॉटम, एसेंशियली इट इज सपोर्ट. और मिड चैनल लाइन, मिड चैनल लाइन सपोर्ट भी हो सकती है और रेजिस्टेंस भी हो सकती है, depending on where the stock price is at the time when we are watching it. Okay? तो अभी आप मुझको बताइए, तो ये चैनल यूज करके या ये कैनल यूज करके हम लोग कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिसाइड करें ये स्टॉक का. इधर फॉर एग्जांपल एजुकेशन पर्पस के लिए हमने एचडीएफसी लिया हुआ है, तो इस एचडीएफसी के स्टॉक में ये चार्ट देखते हुए हम क्या टारगेट ले सकते हैं इसका, कि भाई इसको एक टारगेट देते हैं और इसको एक बॉटम सपोर्ट या स्टॉप लॉस देते हैं. वो कैसे करेंगे? चार्ट देख के कोई मुझे बता पाएगा कि क्या होगा इसका टारगेट एचडीएफसी का, और किस पॉइंट को आप स्टॉप लॉस रखेंगे एचडीएफसी में? 1587. 15,000 below 1,015.87 high upper target 1,800. Correct. Lower target 50,500. Correct. So what you can do is
you can predict. This is how a lot of people, this is how analysts, they predict the target of the stock. तो इधर इस जगह पे जो 1800 हो गया वो टारगेट हो गया. मैं बोलूंगा कि भाई इधर से स्टॉक ऊपर जा सकता है, 10% ऊपर जाने के चांस है, 15% ऊपर जाने के चांस है, और इट कैन गो टू 1800. बट इफ द ब्रेकडाउन फेल्स एंड द स्टॉक गोज बिलो 1587, ये जो चैनल है, channel bottom line है, which has supported it so many times during the full year, it has supported it. So if the stock goes below this point, or which is the channel bottom support, then it means that इसके अच्छे दिन खत्म हो गए हैं. शायद ये स्टॉक नेगेटिव ट्रेंड में जाएगा, शायद ये स्टॉक में ब्रेकडाउन होने के चांस हैं. So what some investors will do is they will keep 1587 as the stop loss for the stock. Not necessarily you should keep 1587 for HDFC. ये एक हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे स्टडी पर्पस के लिए देख रहे हैं कि भाई आप एक स्टॉप लॉस या डाउनवर्ड टारगेट क्या रख सकते हैं कि इसके नीचे गया तो बहुत नीचे जा सकता है, तो मैं इधर बेच दूं. And what you can keep the target कि भाई okay 1800 रीच हुआ तो फॉर लास्ट 1 year 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 times it has not crossed this point, right? तो समझो मेरे पास 100 HDFC हैं या 200 HDFC हैं, सॉरी, तो मैं क्या कर सकता हूं? What I can do is I can do partial profit booking, right? Say because there is a high probability of stock price coming down from here, channel top hit हो गया तो अभी इधर तक आएगा, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जो है वो भी इस लेवल पे किया जा सकता है. देखो HDFC बैंक जो है वो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो स्टॉक है. कई लोग बोलेंगे कि यार HDFC बैंक में क्यों बेचूं. Yes, somebody said something. को आएगा तो क्या कर रहे हैं पूछ के आना. ये इसका करेंगे पहले काम. सर somebody has ये हफ्ते में म्यूट कर दो सर अगर आप. Okay. So you can do a partial profit booking when the stock price comes here. समझो आपके पास 100 HDFC है, या HDFC के बाद जाने दो कोई ऐसा मिड कैप स्टॉक है, you know, तो यहाँ पे उसकी प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है. हो सकता है मैं 100 में से 50 बेच दूं, 50 लॉन्ग टर्म के लिए रखूं, and then when it comes over here, say it comes at 1700 or near 1700, I will buy back. तो 1800 पे मैंने 50 स्टॉक बेचे हैं, तो जब उसका 1800 का 1700 आ जाएगा तो मैं वही 50 स्टॉक फिर से ले लूंगा, तो 50 के बदले 60 या 55 या 70 ही आ जाएंगे. तो कंपाउंडिंग जो होता है वो इस तरह से भी होता है. You know, your own money, you are again and again investing in the same stock by compounding it. And compounding work, making your money work harder, happens this way also, right? कभी मैंने समझो 1800 पे 50 स्टॉक इसके बेच दिए, ओके, तो 1800 into 50, so that is 90,000. अब अगर 1700 रुपए में जब आ गया तब मुझे लगेगा कि ओके यहाँ पे मिड चैनल सपोर्ट है और मैं इधर से ले लेता हूं, तो आई विल बी एबल टू बाय 52 और 53 स्टॉक्स. तो मेरा जो 100 HDFC का कोटा था, 100 HDFC स्टॉक्स का, that became 103, right? So that compounding happens this way also, while you are buying or selling stocks at resistances and buying it at supports, right? And this is also an example, this is also an example of a stock in upward trend. जैसे एक अपवर्ड ट्रेंड या प्रोग्रेसिव चैनल होती है, उसमें आप चैनल बॉटम, चैनल टॉप, ये सब होता है,
उसी तरह से एक रिग्रेसिव चैनल भी हो सकती है. As you can see over here, this is a regressive channel. रिग्रेसिव चैनल क्या है? तो वो चैनल जिसके अंदर स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है, ट्रेंड नीचे जा रहा है. All the parts of the channel are same. Channel top is resistance again. Channel bottom is support. Mid channel is either support or resistance depending on where the stock is. देखो, for example, here mid channel line supported the stock again over here, coming over here. Mid channel line supported the stock and kept the stock below it. When the stock price was below the mid channel line over here, here it did not allow it to go above. Here it did not allow it to go above. But here once with momentum, when it went above, तो वही लाइन जो रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट बन गई. बराबर है. जैसे मैं कहता हूं कि भाई गंगाधर ही शक्तिमान है, वैसे ही जो सपोर्ट है वही रेजिस्टेंस है. अगर आप वो सपोर्ट के नीचे हैं तो आपका वो रेजिस्टेंस, सपोर्ट वो लाइन के नीचे हैं तो वो रेजिस्टेंस हो गया, और वो लाइन के ऊपर हैं तो वही लाइन आपका सपोर्ट बन जाएगी. Here we have given example of a regressive channel. Clear? Any doubt? Any questions? So according to you, the due to parallel channel training, Jubilant Food is good at 300 rupees or 200 rupees. Am I right? No. It took twice the mid channel line support over here, right? Okay. And it is taking a support again. It is having some other kind of support over here around Okay. this range. The trend is not going negative. It is continuously remaining flat. So I feel that Jubilant Food is in the process of bottom formation over here. Okay. And if it goes over here around 450 or 460, there is a chance that it will hit the channel top again. Okay. Now channel top hit करने के बाद या channel bottom hit करने के बाद क्या होता है? Okay. Either it will break it. So if it breaks the channel and goes up, then it will be a channel top breakout, which is considered a very solid breakout. And ये जो negative trend है, जो negative trend में नीचे जा रहा है stock, there is a chance that after that channel top breakout, the trend can change और वही stock ऊपर के side एक नया channel बना लेगा. So channel top breaking can change the trend and can make the trend into a positive trend, and the stock can go form another channel from where it will start going up in this way. Correct? Correct. Similarly, if the channel is broken over here, somewhere over here, the stock can go down in another regressive channel. Got it? For example, if HDFC stock goes below, say closes below 1587 and goes to 1580, then what will happen is from this point, it will start another channel, which will be a regressive channel. Okay. Right? So channel top breaking is a major breakout. Channel bottom breaking is a major breakdown. You should consider it that way. A trend is changing. When channel top breaks, a trend is changing and the stock is becoming more powerful. When the channel bottom breaks, the trend is changing and the stock may become more weak. This is the common perception that you should get from this. Clear? Okay. Now what we will do is, we will go to the chart and we will come back to the presentation later. But let us go to the chart and I'll show you how we can draw this so-called parallel channel. Okay. Okay. Just give me 1 minute. I will start a trading view.
You all can see my chart view, trading view. Hello. Guys, can you see my chart? Hello. Yes, we can see. Okay. Now let us start with the Nifty 50 channel. कि ये जो मैंने बोला कि हर एक स्टॉक एक चैनल में चलता है और हर एक उसका एक चैनल होता है, तो निफ्टी का भी कोई चैनल है क्या? देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? देखना है कि नहीं देखना है? हेलो, आई एम नॉट गेटिंग आंसर्स. एक दो लोग अपना माइक अनम्यूट रखो और आंसर दे दे रहो. यस गाइस, ओके. तो ये है निफ्टी 50 का चार्ट राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ 1995. तो इसको हम थोड़ा और ब्रॉड करते हैं, थोड़ा उसको 20 साल के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, समझो. ओके. सो व्हाट आई विल डू इज, ये जो इधर फर्स्ट और ये जो सेकेंड लाइन है, इसमें नीचे आपको ये पैरेलल चैनल ऑप्शन दिखता है. ट्रेडिंग व्यू में आपको ट्रेडिंग व्यू ओपन करना होगा. जब ट्रेडिंग व्यू आप ओपन करेंगे तो समथिंग लाइक दिस आपको चार्ट दिखेगा. ओके, ये भी नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा. ओके, इस तरह से कुछ चार्ट खुलेगा आपके पास, बराबर है. इसको जब हम बहुत लॉन्ग टर्म पे जाते हैं तो इसको मंथली व्यू पे डालते हैं. मीडियम टर्म के लिए कुछ डिसीजन लेना है तो वीकली पे लेते हैं, और जब शॉर्ट टर्म के लिए कुछ देखना है तो डेली पे देखते हैं. तो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजंस. तो ये हमको 15-20 साल का लास्ट चार्ट देखना है. वी वांट टू सी द चार्ट ऑफ 15-20 years. So what we are doing is we are making it on a monthly candle. So what is a monthly candle? Monthly candle I will explain you. Monthly candle means एक महीने में, in the last 1 month, whatever movement of the price has happened is as per this candle only. So a red candle means the price opened higher and closed lower. A green candle means the price closed lower and closed higher and opened lower. तो अगर प्राइस नीचे चालू होके ऊपर बंद होता है तो कैंडल का कलर ग्रीन होता है. अगर प्राइस ऊपर चालू होके नीचे कब बंद होता है तो कैंडल का कलर रेड होता है. गॉट इट? ओके. अब इसमें और हमको क्या देखना है कैंडल के बारे में? ये जो कैंडल का, ये जो कैंडल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये लगता मोमबत्ती जैसा है. इट लुक्स लाइक अ मोमबत्ती कैंडल, बराबर है. कैंडल में तो ऊपर की साइड ही आग होती है, इसमें नीचे की साइड भी हो सकती है, या कई बार दोनों साइड पे आग हो सकती है, जैसे इधर है. तो जब कोई कैंडल के दोनों साइड आग होती है तो उसको हम डोजी कैंडल बोलते हैं. ऐसे डोजी कैंडल का मतलब होता है इनडिसाइसिव कैंडल. ये देखो एक और डोजी कैंडल, राइट. डोजी कैंडल का मतलब होता है इनडिसाइसिव कैंडल. मतलब मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि पॉजिटिव साइड जाऊं या नेगेटिव साइड जाऊं. ओके. ग्रीन कैंडल का मतलब है मार्केट पॉजिटिव साइड जा रही है. रेड कैंडल का मतलब है मार्केट नीचे की साइड आ रही है. खुली इधर थी लेकिन नीचे आई. ओके. तो ये होता है कैंडल. अभी हम क्या करेंगे, हमको तो 20 साल का ये देखना है, राइट. तो 20 साल पे मैं चार्ट को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ऐसे एडजस्ट करूंगा कि वो 20 साल का, जरूरी नहीं है 20 साल का देखना, ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं खाली. ओके. फिर ये फर्स्ट नहीं, इधर सेकंड जो है उधर नीचे जाके पैरेलल चैनल सिलेक्ट किया. नाउ पैरेलल चैनल व्हाट इट इज शोइंग, इफ यू सी व्हाट इट इज हियर, तो 1 dot and 2 dots, so 2 tops and 1 valley is to be connected. You can see उसमें जो उसका सिंबल है, symbol itself is self indicative what is to be done. So 2 top mountain tops and 1 valley is to be connected for creating this channel. तो ये मैंने क्रिएट किया, ये टॉप सिलेक्ट किया,
फिर इधर ये टॉप सिलेक्ट किया, राइट, और फिर ये वैली सिलेक्ट कर लिया इधर। ओके, तो ये हो गया मेरा 20 साल का निफ्टी का चैनल। 20 साल से निफ्टी इसी चैनल में चल रहा है। क्लियर गाइस? थोड़ा रिप्लाई दिया करो तो पता चले, लिख के दे दो या फिर बोल के दे दो। ओके, क्लियर। Clear, sir. सो नाउ ये चैनल हो गया 20 साल का। तो अभी निफ्टी इधर है, तो नाउ इसमें आप मुझको बता सकते हैं कि एक नेगेटिव साइड का आप मुझे टारगेट दे दो कि कहां तक जा सकता है, और एक पॉजिटिव साइड का टारगेट आप दे दो ये चैनल देखते हुए कि निफ्टी कहां जाएगा 20 साल से। अब देखो, अब साइकोलॉजी पे आओ। 20 साल से, लास्ट 20 years, this channel has not been broken, the channel that we just drew. 20 years, what all happened in 20 years? 2008 subprime crisis, one of the biggest financial crisis of the century that world has ever seen. बट फिर भी अपना निफ्टी तो थोड़ा नीचे आया, लेकिन फिर उसको बहुत प्रॉब्लम नहीं हुआ, बराबर। ये चैनल तो नहीं तोड़ा, मिड चैनल लाइन तोड़ा उसने 2012-13 में, लेकिन ये चैनल तो नहीं तोड़ा। Now 2020, what happened? We all know in 2020 COVID pandemic, the whole world shut down. पूरी दुनिया बंद हो गई, स्टैंड स्टिल हो गई, लाखों करोड़ों लोग मर गए। तब भी ये निफ्टी ने इस चैनल हमारी को नहीं तोड़ा। तो अभी हो सकता है कि ये चैनल को नीचे की साइड तोड़ने के लिए तो बहुत ही कुछ बुरा, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ हुआ तब भी हो सकता है ये चैनल टूटेगा, वरना ये चैनल नहीं टूटने वाला। ओके, वैसे ही अपर साइड पे भी 2007 के पहले जो यूफोरिया था मार्केट में, उस टाइम पे भी ये नहीं तोड़ पाया। फिर कोविड के बाद जो मेगा 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 बुलिश रैली आई, उसमें भी ये चैनल टॉप नहीं तोड़ पाया। तो ये चैनल टॉप तोड़ना मुश्किल होगा, बट लुकिंग एट दिस चैनल टॉप से बाय 2025, और हियर आई टेक माय कर्सर, तो उधर आप देख सकते हैं ना, इधर ये भी आगे जा रहा है। तो अब मैं एक साइड वाइज ये करूंगा वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन को ये नीचे देख रहे हैं आप, जो ये स्क्रॉल हो रहा है वहां पे, जैसे जैसे मैं स्क्रॉल बढ़ा रहा हूं तो डेट भी आ रहा है। तो अगर मैं जनवरी 2025 पे वर्टिकल लाइन कर दूं, तो इन द बेस्ट केस सिनेरियो निफ्टी कहां हो सकता है, और इन द वर्स्ट केस सिनेरियो निफ्टी कहां हो सकता है। और अगर बेस्ट केस और वर्स्ट केस छोड़ दे तो भी आप समझ लीजिए कि निफ्टी एक कहां हो सकता है। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो आई फील कि मिड चैनल भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यूक्रेन वॉर में भी ये नहीं टूटा है, तो मिड चैनल तोड़ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन द वर्स्ट केस सिनेरियो निफ्टी कैन बी हियर, एंड इन द बेस्ट केस सिनेरियो तो देखो ये चैनल टॉप तोड़ के भी निकल सकता है, बराबर है। बट this is how you can get a target for yourself के निफ्टी कहां जा रहा है। हाँ, वर्ल्ड वॉर कुछ ऐसा हो गया तो फिर हो सकता है इधर भी आ जाए, या इतना कुछ बहुत ही डेंजरस सिनेरियो हो गया तो, बट दिस हेल्प्स यू in creating a rough estimate of what will happen in the worst case scenario and what can happen in a good positive environment. In a very good, very positive environment, it can break the channel top also and go further up. That is a different thing. लेकिन हम सोचे कि चलो भाई इतना अच्छा अगर नहीं हुआ तो भी 21,600 के करीब का टारगेट मुझे जनवरी 25 का मिल रहा है, राइट। अगर हम थोड़ा और देख लेते हैं कि जनवरी 24 का क्या टारगेट दे रहा है सितंबर, हियर इज जनवरी 24। तो जनवरी 24 में सिमिलरली
It is not necessary, guys, again, that it will follow the same path, but in high probability, it can follow this kind of structure. Okay. तो इसमें भी करीब करीब 6,800 6,900 का एक वर्स्ट केस सिनेरियो लग रहा है निफ्टी में करंटली, या बहुत कुछ वॉर टाइप का कुछ हो गया तो अलग चीज है, 15,600 तक जा सकता है, बराबर है। और दैट इज अ वर्स्ट केस सिनेरियो। और बेस्ट केस सिनेरियो में इधर अगर हम देखते हैं, इधर से फिर हॉरिजॉन्टल लाइन आप खींच दो तो आपको नीचे की साइड जो है उसको हम ग्रीन कलर देंगे, ऊपर की साइड जो है हम उसको रेड कलर देंगे। So this is how, with the help of parallel channel, you can determine what can be the targets. Got my point? Right now we are close to 1800 or we are around 17,800. Okay. और हमको टारगेट मिल रहा है 20,628 का. So there is a scope of around 2,800 पॉइंट्स रैली. तो 2,800 पॉइंट्स का अगर रैली का स्कोप है डिवाइडेड बाय 17800, so there is a chance of around, on the positive side, you can say 16% rally, 16% nifty returns का chance है within this year, within this financial year, on the positive side. On the negative side, यहाँ से और समझ लोगे 2000 पॉइंट नीचे, तो 10-12% का चांस है कि नेगेटिव जाएगा, राइट? बट व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ इज अबाउट द निफ्टी 50. कोई एक स्टॉक नाम बताओ जिसको हम किसी को टारगेट विद द हेल्प ऑफ चैनल हम लेना चाहें. सोना B&W. Voltas. Somebody said Sona BLW. So first we'll take that now. Okay. तो सोना BLW जो मैंने कुछ बनाया है, लेट मी डिलीट इट. ओके, अभी ये कंपनी लिस्ट हुई है, राइट? तो फिर हम इसको मंथली पे तो नहीं ले सकते क्योंकि इनफ डेटा नहीं है, या तो हम वीकली पे भी इसका डेली पे देखना पड़ेगा. ओके, सो डेली पे अगर हम देखते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूं. ओके, टू ब्रिंग द करंट जो प्राइस है उसको हम इस तरह से मिडल ऑफ द चार्ट में रखना चाहिए. ओके, सो नाउ गोइंग बाय वीकली, तो मैं वीकली पे भी इस पे जा सकता हूं, मुझे काफी अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं. ओके, सो वीकली में अगर मैं कैनल बनाता हूं इसका, तो ये पीक मिल गया, बराबर है. वो पीक के साथ एक रिसेंटली मुझे इधर का पीक मिला, और एक वैली इधर मिल रहा है. ओके, तो ये ट्रेंड है सोना BLW का. नाउ इसको मैं डेली पे चेंज कर देता हूं. तो guys, what can you estimate looking at this Sona BLW chart? Please tell me. It is likely to break out, right? There is a possibility of trend reversal and channel top breakout. Resistance. It is at resistance, so ho sakta hai it can come down a little bit, again take support somewhere, and then again try to break the channel. So as an investor, what you will do now? I will not buy. You will wait and see, okay, if this is resistance, whether it is taking resistance and coming down, or if it is giving a breakout over here, then probably you can buy. Yes. Right? Yes.
Okay. Somebody else was telling about voltas. Yes. Okay. Voltas. Very similar. Yes or no? Yes. Negative trend. Very similar. Again, we select parallel channel from here. This is the peak to peak and valley. Okay. Now I go to daily. So this is the, इसमें थोड़ा fine tune आपको करना पड़ेगा. Okay. You can fine tune a bit. Okay, like this. Okay. So now this is voltas. Okay. Similar scenario that right now it is near say 823, but it might face a resistance near 872. Okay. Correct? Yes. So either I wait for the channel breakout or I let it come down further, cool down further, and then I can buy it. Now it is in a consolidation state, right? It is in a consolidation state. You can use parallel channel with other parameters, which are like EMA, which are like volume. Okay, you see what is happening over here. Now, channel top resistance as well as its 200 days resistance is very similar. So this is going to be crossing 280 to 95 is going to be very, very, very tough for voltas. Okay. Right now, recently, it will face a big resistance of EMA at 243. Okay. How many of you know EMA, mother father resistance theory? My own theory, which I invented. 50. Is anybody aware? Yes, sir. 50, 100, 200. 100 nahi, 50 and 200. Okay. But okay, you know about EMA, but do you know about mother father theory? No, sir. So you need to if you want, I'll share a video. You can send a hi to me. I'll send you personally a video where I have explained this mother father theory. Okay. So that will help you more in further in analysis. Okay. Okay. So this is how voltas looks right now. So it has two big resistances or three big resistances in front of it. So what is the time frame we have to fix it, sir? For to draw the Pardon? parallel to draw the parallel lines, what is the time frame we have to mention? See, the time frame, the longer the time frame, better it is. We drew a 20-year chart for Nifty. Okay. Yes or no? And here what we have done in the case of voltas. See, in the case of voltas, our channel starts from 2021 to 2023. So it is almost 1.5 year channel. Okay. 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 आपने किधर से आपका चैनल आपने पीक इधर से लिया, but maybe before that peak also that channel is following something. Okay. Some parts of the rally may fall inside or outside that channel. Okay. So outside है उसको ignore कर दो. जितना part आपका channel में अभी इधर है, to take consider that part. Okay. 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 Now, one more thing. What your channel might look like, you know, when you draw it, it might look like this, something like this. Okay. By default, it will look like this, something like this. Okay. This is how it will look when you draw a channel. Suppose I am drawing a channel over here. So when I draw the channel, it will look like this. Then you have to do some adjustment in setting, which I will show. It will look like this, guys. अभी आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करो, सेटिंग में जाओ, ओके, एक्सटेंड लेफ्ट कर दो और एक्सटेंड राइट कर दो. ओके,
तो ये एक्सटेंड इधर हो गया लेफ्ट और एक्सटेंड राइट हो, ठीक है? Okay. Got it? Further, Yes. if you click on the settings, मिड चैनल लाइन इज इंपॉर्टेंट, तो मिड चैनल लाइन को हमको डॉटेड दे देते हैं, तो ये डॉटेड मिड चैनल दे दिया। इसको कलर आप आपकी मर्जी का अलग अलग जो आपको मर्जी हो वो कलर दे सकते हो। ओके, आपको ये चैनल को भी जो कलर देना है वो दे सकते हो। ओके, गॉट इट? Yes, sir. ये चैनल के बैकग्राउंड भी आप कलर दे सकते हो, जो भी कलर देना है। ओके, Okay. ठीक है? Okay, sir. Whatever suits best for you, you can do that. Got it? Yes, sir. Any other channels that you want me to draw? One or two more examples we can take. VIP Industries. Okay. Look what I am doing, huh? Follow the process properly. VIP Industries. Okay. इसमें ऑलरेडी मैंने चैनल बनाया हुआ है पहले से, but no, nonetheless we will do it again. We'll delete everything and we'll do it again. So first of all, try to watch the stock on a large time frame. Okay. Okay, okay. The larger time frame में देखो उसको क्या हो रहा है। From say 2014 it was in uptrend, then it came down, then again it was in uptrend till 2022, then again it came down and it is consolidating. So you get an overall picture of VIP Industries business in last 10-15 years, correct? Yes. Now when you look at it from here, change it to weekly. So weekly will help you. Then you change the time frame. Last 4-5 years, you can look at the week. 4-5 years, what is happening? So it was going very well, and something happened to it in 2018. तो 18 के बाद थोड़ा डाउनफॉल आया, देन कोविड आया, तो कोविड में तो पूरा नीचे आ गया, 174 तक आ गया. It was at 640 levels, then it came to 174 levels, and then after the COVID peak, it was continuously rising, and it kept on rising till March, April 2022. After March, April 2022, there was again a downfall. There was again a consolidation, which is happening right now. After that, it took support of 50 EMA, and then it tried to bounce. Now it has gone below 50 EMA, and now it is again trying to rise above 50 EMA. Okay. So this is basically the trend that will matter to me right now, the trend after COVID. मतलब ये आपको दिमाग लगाना है. What to select what time frame, that is purely up to you. If you want to take a very long term decision, तो ये पूरा इसको ले लो. बराबर है, आपको 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है. If you want to invest in this stock VIP for 10 years, you go by this time frame. It covers everything, right? Yes, sir. If I am looking at a 2-3 years horizon, I will go for the weekly. Okay, and try to draw a weekly chart. This peak and this peak, and one valley, this valley, right? Okay. What is happening in the weekly? It is taken support at mid channel and trying to rise from over here. So what will be my entry in VIP? My entry in VIP will be above 635 closing. Okay. And my targets will be 700. 731, 758, and probably 800. Yes. Correct? Correct. So weekly. Now, if somebody wants to do it for few months or 1 year or 2 year is the time frame, तो थोड़ा उसके हिसाब से आप चैनल बना लो. Same stock can have different kind of channels.
Okay, Okay. got it? This is also a good channel. Okay. So now on a small time frame, if I'm looking at VIP for a short-term trade or a positional trade, what I will do is I will make a partial entry in the stock above 616 X by 2. I will go X by 2 above 643. My targets will be 681. Then my target will be around 710. This So is my positional entry in you'll VIP be industry. you will be taking above EMA, right? Am I right? Exactly. So first entry X by 2, I will go above 50 EMA, and X by 2, I will go above 200 EMA. Okay. Or if it is not able to cross 200 EMA, when it is coming down, it is coming near my cost, I will exit the counter. Okay, the rally does not have strength. Can we enter at EMA 50 and sell it at to EMA 200? Very short term target. Yes, why not? Okay. That is how intraday people will work. Okay. Correct? Okay. For intraday, please help me, sir. See, this canal or channel can be made for 1 hour also. Then this will change. Correct? Correct. 1 hour it is in an uptrend. Depends on what is your outlook, what is your time frame. In 1 hour, now it is above mid channel line, above 50 EMA, above 200 EMA. So Yes. now I can take entry At 600. at say 600 or 605, to be sure 605 or something. Okay. And I can exit X by 2 at 606 and final at 613, and Yes. then final full exit near 620. Yes. 20 rupees. 20 rupees I can do this play. Correct? Got my point? Yes, sir. So different time frames will How give to- you different outlook What for is the stop loss below 50 EMA? Am I right, sir? 590 is the yes, stop loss. yes, 587 will be my stop loss. Okay. So now what you do, you calculate risk reward. Okay. So I am entering at 602. What is the upper side potential? 20 rupees. What is the downside potential? 20 Say rupees. 13 rupees. So risk reward is in favor, yes. But still it is a 60-40. It is not a 90-10 kind of risk reward, right? Okay. But what if I sell it if it closes below 595 or say 593 or say mid channel line 592? So my risk is 8 rupees, but my upside potential is 20 rupees. So risk reward ratio is 60-30 now Yes. or 66-33. Yes. So you have to determine your stop loss based on the risk reward ratio that you can see over here, Okay. that you can calculate. So your little bit of mathematical skills, your little bit of analytical skills, little bit of common sense is also required in knowing how to use these tools. Correct? Right, sir. Okay. We'll do one final last call. Somebody has written about Reliance. Okay. Let us do a Reliance Industries. So Reliance Industries, let us do Reliance Industries on a first look at it. See, look at a stock from all the angles. Long term, short term, all the angles you look. So long term scenario, Reliance looks good. Yes or no? Yes or no? Does not look good. क्या भाई, रिलायंस अच्छा किसको नहीं लग रहा है?
long term, this channel starts from say 2002 and it has not broken this channel. तो channel तो बहुत मजबूत है अपना, right? तो अब ये स्टॉक इधर से ऐसा होके इधर से सपोर्ट लेके लेके थोड़ा ऊपर जाके फिर इधर तक जाने वाला है 3000 रुपए तक. ओके, एक साल का हम देखते हैं. टुडे वी आर इन अप्रैल 2023 से बाय अप्रैल 2024 क्या होता है इधर. तो बेस्ट पॉसिबिलिटीज क्या है, वर्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या है, देखो. क्या लग रहा है? नो रिप्लाई है. Nobody seems to agree with me. The Reliance might be going towards 3000. 2300 to 3100. It can go below this also, but it does not look very likely because here somewhere over here you have mid channel support plus you have the 50 EMA support, right? So two major supports are there which will keep Reliance above 2000, 2021, 2022 levels. Plus there will be a share split in Jio Financial का share free मिलेगा, right? तो रिलायंस में अगर आप सिंपली इन्वेस्ट कर देते हो तो लॉन्ग टर्म चार्ट बोलता है कि यहां से 700 रुपया एक साल में कमाने का चांस है, 700 800. और डाउन साइड कितना है? डाउन साइड इज नॉट मच, नेग्लिजिबल डाउन साइड. 2000 will be the last stop loss. एग्जैक्टली. तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में आप सोचो. तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज टेलिंग दैट एंटरिंग रिलायंस right now is making sense to me. Okay, let me look at it in weekly time frame. तो ऐसा थोड़ा टाइम स्पेंड करना होगा आपको, थोड़ा एनालिसिस करना होगा. सी, यू आर पुटिंग योर हार्ड अर्न मनी इन अ स्टॉक, राइट? तो थोड़ा एनालिसिस करके थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर करो इन्वेस्टमेंट. किसी ने बोल दिया, विशाल बलिया ने बोल दिया कि खरीदो तो क्यों खरीद रहे हो, मनी कंट्रोल ने बोल दिया खरीद लो तो क्यों खरीद रहे हो, XYZ ने बोल दिया खरीद लो तो क्यों खरीद रहे हो. थोड़ा खुद रिसर्च करो, थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा सीखो, थोड़ा चार्ट सीखो एंड देन डू इट. If say you buy 100 Reliance, okay, and you earn 800 rupees on those 100 Reliance, तो कितना आपको पैसा मिलेगा? 80,000. There is a scope, right, in 1 year. Okay, down scope भी है, but that earning that 80,000, if you have to put some effort, that effort is worth it. If you have to learn charts, वो 5, 10, 15,000 फीस दे दो, आपका एक ट्रेड ही ऐसा होगा जिसमें आप सारे पैसे कमा लोगे. Invest your time in learning. Invest your time in learning charts. Invest your time in learning important fundamentals क्या है, कैसे देखने के, कहाँ ढूंढना, important chart, how to make a chart, कैसे चार्ट बनाना, क्या क्या देखना, कहाँ पे क्या वॉल्यूम होता है, क्या RSI होता है, क्या MACD होता है, क्या पैरेलल चैनल होता है, क्या फिबोनाची चैनल होता है, क्या EMA है, क्या मदर फादर थियरी है. If you learn these things in a long run and you apply those things in a long run, you will not lose money in stock market. Short term speculative की बात मैं नहीं कर रहा हूं, but I am talking about long term investment. तो 5, 10, 15,000 कोई आपको मैं सिखा रहा है ना ये सब अच्छी तरह से, ये सब टूल्स कैसे यूज करने के, ये चार्ट कैसे बनाने के सिखा रहा है, सीख लो. इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है. देयर इज नो बेटर इन्वेस्टमेंट देन इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, राइट? और किसी पे क्यों भरोसा करना? आज विशाल बलिया बोल रहा है, या आज रिदम परीख बोल रहा है, या आज कोई भी XYZ एनालिस्ट बोल रहा है
कि भाई ये खरीद लो, तो हम खरीद लेंगे। क्यों? हम खुद रिसर्च एनालिसिस क्यों नहीं कर सकते जब इतने इजीली फ्री ऑफ चार्ज ये सब टूल्स अवेलेबल हैं? अगर आपको किसी से नहीं सीखना है तो आप 50, 100, 200 घंटे आप यूट्यूब पे बैठो। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल टीच यू लॉट ऑफ थिंग्स। फ्री में आप सीख लो। आप हैप्पी कैंडल्स इन्वेस्टमेंट का चैनल सब्सक्राइब करो, उस पे अगर आप वीडियो देख लोगे ना, टाइम स्पेंड कर लोगे ना, देन ऑल्सो यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फॉर फ्री। देर आर, अभी जो मैं सिखा रहा हूं ऐसी कई चीजें मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पे वी हैव टॉट फॉर फ्री। So do utilize that. If you want hand-held training, one-on-one training, group trainings, तो ये भी possible है। बहुत नॉमिनल फीस है हमारी, 10,000। अलग अलग पैकेज है। बहुत बेसिक लेवल का चाहिए तो 10,000 है, थोड़ा एडवांस चाहिए तो 15,000 है। अगर ऑप्शंस, फ्यूचर्स ये सब सीखना है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी प्लस बेसिक्स, फंडामेंटल्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, चार्ट बनाना, तो भी उसकी 25,000 फी है। 3 महीने का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो, आपका 1-2 ट्रेड में ये सब पैसा वसूल हो जाएगा, आई एश्योर यू। एंड द मेन थिंग दैट विल हैपन इज यू विल नॉट हैव टू डिपेंड ऑन एनीवन कि XYZ कॉल दे देगा तो अपना काम होगा। You will yourself do this target setting, you will yourself do this stop loss setting, एक्सेट्रा। तो इधर मुझे रिलायंस में ये एक सपोर्ट नजर आ रहा है 2185 पे, और इधर चैनल बॉटम सपोर्ट भी इधर करीब करीब इधर है। ऑन द अपर साइड थोड़ा रेजिस्टेंस है हियर नियर 2780 लेवल, 2866 लेवल। ओके, पॉइंट इज नॉट लेक्चरिंग यू गाइस, पॉइंट इज थोड़ा आप अपने आप में इन्वेस्ट करो, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके सीखो इन एजुकेशन। यू विल डेफिनेटली मेक गुड मनी। एंड बाय से as per this, if we are seeing November 23, say we are keeping a cutoff of say January 1, तो January 1 में as per the current trend डाउन साइड ज्यादा नहीं है, 2185 है, और अपसाइड can be 2862, or it can be if it is stopped by this mid channel resistance तो 2780, और अगर मिड चैनल रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर निकल गया ना ये, तो ये 3200 के अलावा रुकने वाला नहीं है। तो ये बेस्ट और वर्स्ट केस सिनेरियो आपके सामने है, वेरी इजीली डन। ये वर्स्ट केस, ये बेस्ट केस, हाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो 31, 32 दिखा रहा था, इसके हिसाब से तो 35 भी जा सकता है, ऐसा दिखा रहा है, राइट? हाँ, ये 2185 के नीचे चला गया तो ट्रेंड इज गोइंग नेगेटिव, देन यू 2185 शुड बी योर स्टॉप लॉस, और दिस लाइन 200 वीक CMA 2060। ठीक है, तो इस तरह से यू डिटरमिन योर स्टॉप लॉसेस and you determine your targets with the help of parallel channel. Okay guys, now we will again go back to our presentation. We'll just summarize what we learned today. So in the cases where the stock breaks the channel on either side, we call it a break out or a breakdown, right? एक मिनट, somebody has sent a message. Okay, nothing. Okay, he understood. Okay, so channel tops and channel bottoms are very important, so be aware of that. When that is happening, then you need to take care of your investment. When channel top is broken, it is an indication that the stock is going into a bullish territory. Okay, further, can anybody tell me who this gentleman is? You can open your mics.
कोई बता सकता है ये कौन है? गाइस माइक आप अनम्यूट कर सकते हैं या लिख के भी भेज सकते हैं. Is any Newton? No. Okay, my next slide will you will definitely know who is. Mona Lisa. Mona Lisa. That this fellow is connected to Mona Lisa somehow. This is the fellow who drew Mona Lisa. Okay. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, yes. So now you see what Leonardo da Vinci had said, one quote. As you know, he was a great scientist. He was a great mathematician. He was a polymath. He was an engineer. He was an architect. He was sculptor. He was a poet. He was a painter. He was everything, right? He has said one very nice line about simplicity. He said that simplicity is the ultimate sophistication. Lot of analysts, you might not have seen any analyst use this tool of parallel channel, because it is very simple to use. ऐसे ऐसे दो टॉप खींचा, एक बॉटम को कनेक्ट किया और ये चैनल रेडी हो गया. तो इतना सिंपल चीज जो कि बहुत एक्यूरेट है, विच इज वेरी एक्यूरेट, इतना इफेक्टिव कैसे हो सकता है? Because effective to be something to be effective, it has to be complicated, it has to be rocket science, it has to, you know, so बहुत सारा formulation, ऐसा ऐसा चार्ट खतरनाक होना चाहिए तभी एक्यूरेट होगा. सिंपल चीज एक्यूरेट कैसे हो सकता है? ये एक हमारा माइंडसेट है. बट वॉरेन बुफेट ने भी बोला है की स्ट्रेटजी, राइट? कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड. लियोनार्डो डा विंची भी वही बोल रहा है कि सिंप्लिसिटी is the ultimate sophistication. ज्यादा टूल सीखने की, ज्यादा you need not learn lot of tools, you need not be big expert. If you take care of few things, EMA, support, resistance, parallel channel, channel top, channel bottom, channel mid, this is more than enough to earn money, guys. ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है इन्वेस्टमेंट. एक डिसिप्लिन फॉलो करना है एंड यू हैव टू स्टिक टू दैट. कीप इट सिंपल. सिंपल इज सोफिस्टिकेटेड, एज लियोनार्डो डा विंची इज सेइंग. Bruce Lee had once said, and I repeat this many times, it is one of my favorite quote, that I am not afraid of someone who knows 10,000 different punches. I am afraid of someone who has practiced one punch 10,000 times. So let this parallel channel be your one punch. Make it perfect. Practice it on thousands of charts, and it will help you in making money. That I can assure you. In addition to parallel channel, you can use supports, resistance, EMA, SMA, volume. And that will be more than enough for you to earn money. Keep it simple, keep it stupid, earn money. Focus on discipline. And of course, the charts that we saw right now, Jubilant Food and HDFC and Reliance and all those things, they are just for educational purpose. Don't consider them as the target. It is just for education. Create your own targets and stop losses. I hope you guys who joined had a good time. If you have some questions regarding some stocks, कोई stock के बारे में कुछ पूछना है, या फिर कोई parallel channel के बारे में कुछ पूछना है, तो let me know. It is open mic. You can unmute and you can ask your questions now. Thank you, sir. You had a very good session. It's my pleasure. Anybody else has any other questions? Or we can close it for today. Later on, you can ask questions in the group also. In various groups, you have my mobile number 7043469423. तो उस पे भी आप लोग अगर ग्रुप में हैं तो उसमें भी आप कर सकते हो. मुझे क्वेश्चन अगर कुछ करना है तो, right? Thank you, sir. And we'll close this session now. Thank you, sir. I hope you are all taking something good from this Sure, sir. session. Sure, sir.
ओके ओके प्लीज आप जो भी ग्रुप में हैं वो ग्रुप में आपको कैसा लगा वेबिनार उसका भी कमेंट कर देना ताकि दूसरे लोग भी बाद में फ्यूचर में हमारे प्रोग्राम्स में दे ज्वाइन इन बिग नंबर्स एंड आई विल आल्सो ट्राई टू शेयर द लिंक ऑफ दिस recording. I'll upload it in YouTube and I'll share the link so that those who missed can benefit. और अगर आपको कोई पार्ट चार्ट कैसे बनाना, मैंने क्या किया था, कौन सा बटन सिलेक्ट किया था, उसमें भी कोई डाउट हो, you can go back to the video and look it and उधर से आप सिलेक्ट कर सकते हो. Okay guys, have a nice weekend, have a nice evening and please keep joining in the sessions like this in future. Thank you, sir. Sure, sir. Bye. Thank Bye you. everyone. Happy wealth creation.